Friends, as you all know that tourism is a very interesting subject for everyone. We get the happiness and the knowledge when we visit different places. So friends, let's have a tour of Odisha. He will give some information on food and resources of Odisha. Odisha is leading producer of bauxite and iron ore. Second, Madhura Thorat. She will give some information about the climate of Odisha and the cultural customs of Odisha and further the traditional folk dances. Third, Aditi Khande. She will give some information on festivals and folk art of Odisha. Chow dance is the folk dance of Odisha. Fourth, Yash Mungse. He will give some information on structures of temples in Odisha. There are also stone carving on temples. I will talk about food and resources of Odisha. So let's begin. Odisha is the eastern Indian state of the Bay of Bengal. Bhubaneswar is the capital of Odisha. It is known for ancient Hindu temple. It is the second largest producer of fruits in the country. Milk production in the Odisha state doubled from 2004 to 2014. Odisha is one of the leading vegetables plantation crops and rice producing states of the country. Now we will talk about the human resources of Odisha. There is availability of dedicated human resources measuring in agriculture, horticulture and food technology etc. Now we will talk about the food processing industries. There is a vast untapped potential for food processing industry. Government of Odisha plans to augment the growth of food processing from 0.7% to 10% by 2017 and 25% by 2025. Now we will talk about the different cuisines of Odisha. There are Odisha's Rasgulla. The next one is Arisa Pitha and there is Kheer Sagar. Thank you. Now Thank my you. next team member will give you more information about Odisha state. So, talking about the climate of Odisha, Odisha is referred to as one of the warmest cities of India and it has a very warm weather. The daily temperature is 32 degrees centigrade and the yearly average temperature is 32 degrees. It is year-long warm or hot and there are very few months in which it has tropical or humid weather. Moving forward and talking about the cultural costumes of Odisha. So, cultural costumes of Odisha for women are Sambalpuri sari, and for men it is gamecha, dhoti, or simply a kurta. And moving forward to the graceful and unique dances of Odisha, Chow dance, Karma dance, Dannata, and most renowned, the revered classical dance form is on the name of the state that is known as Odisha. The capital of an Odisha is Bhubaneswar and it is also called as a temple city of India. And the famous temples of the Odishas are Lingaraj temple, Konark temple and Jagannath Puri temple. Jagannath Puri temple, the total area covered by it is 4 lakh square meter area. The 120 temples are present in it. The height of a tower of a temple is 65 meter and it denoted to Lord Vishnu. Lingaraj temple. It is present in Bhubaneswar and it is one of the oldest temple. It was built in 11th century. The height of a temple is 55 meter. Konark temple. It is present in the Puri district. It denotes to the Surya Devata. It was built in 13th century and the height of a tower of temple is 65 meter. Thank you so much. नमस्ते, मैं अदिति खांडे आपको ओडिशा के त्योहारों और लोक कलाओं के बारे में बताने वाली हूँ। ओडिशा के त्योहार ओडिशा में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व प्रसिद्ध है, जैसे दुर्गा पूजा, रथ यात्रा, चंदन यात्रा आदि। दुर्गा पूजा 10 दिनों तक चलती है।
यह त्यौहार बड़ी ही उत्साह और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह हर साल पतझड़ की मौसम में मनाया जाता है। यह एक धार्मिक त्यौहार है जिसके बहुत महत्व है। रथ यात्रा, यह यात्रा प्रभु जनकनाथ से जुड़ी हुई है और विश्व प्रसिद्ध तरीके से मनाई जाती है। तीनों रथों को बहुत सुंदर और भव्य रूप से सजाया जाता है। तीनों रथ 9 दिन तक रहते हैं। उसके बाद इन तीनों रथों की रथ यात्रा वापस अपने मुख्य जनकनाथ मंदिर जाती है। जनकनाथ मंदिर में हिंदुओं को ही आने की अनुमति होती है, परंतु यही वो दिन है जब सारी जातियों के लोगों को आने की अनुमति होती है। चंदन यात्रा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से अगले 20 दिनों तक चंदन यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। भगवान के शरीर को चंदन एवं अन्य लेप लगाकर उनकी भक्ति की जाती है। लोक कला, अनेक जातियों व जनजातियों पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। इनमें से ओडिशा की विशेष व पारंपरिक लोक कला है पटचित्र कला। इन चित्रों का निर्माण सूती कपड़ों की 2 परतों की लेयरी द्वारा आपस में चिपकाकर तैयार की गई सतह पर किया जाता है। इसे पटचित्र कहते हैं। लोक कला एक ऐतिहासिक कला है जो बहुत सी जगहों पर प्रचलित है, जो पुराने इतिहास की कहानियों को कला के रूप में बताया जाता है। धन्यवाद। Hope you must have get information about Odisha. Thank you.